Okay, friends. So we are starting our group discussion for this year's IOCL, that is 2024. And normally, if I tell you the trend in IOCL about the group discussion, they tend to ask you the question from GD topic they tend to give you, which is actually somewhere in the news. I remember when last time Infosys chief Narayan Murthy sir has talked about more number of hours working per week. That time the topic was asked in GD in this IUCL. So this time he's raking up the issue of population, and the population of India is the most populated nation in the world, and population may not be sustainable or viable. Since he has raised this issue, the population becomes an important topic for us this year also. So, friends, I'm giving you the topic: population of India not viable and sustainable. And it comes on your this chat box: population of India not sustainable and not viable. That is a topic given this year. So, for I'm giving you this particular topic. So now, I'll be giving you some time to think, let's say 1 minute or so, and then we can start our discussion. Let me tell you in the introduction what is expected from you is like you give the direction to the discussion. Introduction typical lines are: friends, my name is this, and the topic given is, and don't give wrong, title or the topic which is given should be properly spoken. Population of India not viable, not sustainable. That is the topic given. You may agree with the statement, you may not agree with the statement, you partially agree, you partially disagree. After that, you will tell others that how you want the discussion to go, some classification, and then you may give your opinion, and after that you will open the house for discussion. Others will start discussing, and then you will give your point. So you need to be maximum attentive during next 15 days. I'll be next 15, sorry, minutes. I'll be giving you more time for practice, not 15, but I'll be giving you more for practice, and maybe I may ask each one of you to conclude later on, or if I may ask more of you to introduce also. So that is for the practice only. Actual format of IOCL is one fellow will introduce, one fellow will conclude, and 15 minutes discussion will be there. So pen and paper in your hands simply means you can jot down the important words or important points raised by other members for conclusion. Conclusion is the easiest thing. So if you master your skills in introduction or conclusion, you can easily do that in the group discussion there, and that will give you an edge. GD is not difficult, but with the practice it comes. No, because it is a public sector, friends. The good thing is like आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं. It is सर not कैन that. बी बाइलिंगुअल सर हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल सकते हैं Yes, you can speak in Hindi or English or mixture of these two. You can do that. So the most important thing is like keep yourself close to the topic or topic के बारे में बात करो. Many of you will feel that okay, you are not in position to enter again and again. So in that particular situation, you are to focus on the content. The content, the thing which you speak, that should be really good. Observer is listening to you, and then the content wise, this thing will be good for you, right? I give you 1 minute to think over it. The moment I say start, one of you will start that discussion. Anybody wants to ask any question to me? No. Okay, so 1 minute for you to think, and then we start the discussion. Okay, friends, you can start now. Okay, guys, myself Tanishq Singh, and I'm going to start this group discussion. First of all, I am very opportunate to start this group discussion, and the topic of our GD is population in India is not sustainable and viable. I totally agree on this topic because the increment in population leads to various diverse effect in negative scenario. First of all, the greater the population, greater will be the problem to accommodate the population in this country. Secondly, unemployment, which is the major issue among the youth, which they are facing day by day, and one of the major problem is population. Thirdly, greater will be the population, greater will be the demand of the energy, and greater will be the depletion of fossil fuel, and which leads to the ultimate pollution in the climate, which will harmful for both the climate and what I can say, for the human health also.
So now I open the house for discussion. I So totally Tanish, I agree agree with with you. what The point Tanish you has raised said about that not having population में जो adequate create jobs for the पॉपुलेशन youth frustration बहुत over population of इंक्रीज हो climate गई India है, change and उसके the is कारण really a एक public challenge, sector ये हो and रहा है because कि also one of the on कंजेस्टेड one hand सिचुएशन we हो have गई है not enough और skilled हेल्थ केयर population सिस्टम भी to go ओवरलोड हो into the चुका है। employment तो sector, जितनी and ज्यादा on the other पॉपुलेशन hand होगी there is the उतना immense population we अर्बनाइजेशन have I to को think get पिकअप employed. करना So we पड़ेगा। that have is really a sufficient time. double-edged sword. हम लोगों के पास sufficient time है तो one by one कोई discuss कीजिए। एक करके बोला जाए सर। Yes, that will I be agree correct with option. आई एग्री विद तानिष्क कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और क्या कहते हैं हेल्थ फैसिलिटीज पे भी इफेक्ट पड़ेगा। आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज की जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उस पे हमारा डिपेंडेंस भी बढ़ जाएगा। तो वाटर कंजर्वेशन है या आपका फूड स्कार्सिटी है, इंडिया जो है वो हंगर इंडेक्स में कितना पीछे है बिकॉज ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन। I तो ये totally बहुत agree with Okay, Reena I what he totally said agree that with both of Reena you. that पॉपुलेशन इंक्रीज के कारण अभी हम एक एग्जांपल देख सकते हैं 2 साल पहले का जब कोविड का कारण लॉकडाउन हुआ था तो पॉपुलेशन के कारण ही मतलब बेड कम पड़ गए थे हॉस्पिटल में और मतलब ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत हो गई थी और इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है कि फूड सिक्योरिटी में भी इशू आ रहा है कि एक्सेसिव फूड शॉर्टेज होने लग गई है और इसके कारण फूड प्राइसेस भी कभी कभी मतलब इन्फ्लेट कर जाते हैं। तो ये बहुत मैं एक बड़ी फैक्ट के सिचुएशन है। मैं एक फैक्ट के बारे में बात करना चाहूंगा कि इंडिया का जो अभी पॉपुलेशन है मतलब इंडिया में जो लैंड मास है टोटल लैंड मास जो है वो अबाउट 2% ऑफ वर्ल्ड लैंड मास है, जबकि इसमें 16% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड मतलब अभी रह रहे हैं। या तो सही अभी कह हम रहे लोग का हैं। ये कंडीशन है, तो ये मतलब अभी मतलब क्या कहते हैं मतलब ज्यादा डेंसिटी मतलब अभी हो गया है। Yeah, तो agreed, अभी हम लोगों Sridhar. को That is the I correct, also want but to add that. So एक्चुअली basically, the per capita land available is अगर very हम low बात in करें India in compared to respect other of nations. And also, the general public are not unaware about the consequences of such huge population. यस यस So, I definitely think apart that the from government that should huge take population action. bring us such some opportunities also. There are we are having lot of labor, so they are the working population nowadays. Whatever India's population you are saying, that is not old age population, these are working population. So यस this is the beneficial for us, so it can contribute to our society in our economy, and there can be many innovations, ideas, entrepreneurship. There will be more demand, so we can expect that foreign investor will come here and India will develop. So currently Yeah. we are as a developing nation, but it will help us. So Yeah, we Kaju, cannot the say point you say mentioned simply about that using the बहुत ज्यादा population to an इम्पोर्टेंट इस वजह advantage से is a great point, अभी because if we see right now, the statistics say that around 40% of the total population is willing to work. If we can increase that number, then definitely the productivity of the whole country will increase, and thereby the GDP will also grow. अभी And इंडिया sir, का जो I है would like मतलब to अप्रोक्सीमेट point मैं ऐड guys, करना चाहूंगा। एवरेज I would एज like है to add इंडिया a में point. I I would like think to I add have a point, एवरेज Rohit, मैं I मैं would like to पॉपुलेशन add का a जो point. एवरेज एज With जो the है increase in वो population, there मतलब will be 29 definitely increase in 29 the ईयर है। demand of if we food, have a lot of young and population, which doesn't will mean give it a is negative advantageous to us impact on until and unless we agricultural provide the right industry, employment opportunities. which will मैं एक point definitely ऐड give करना a चाहूंगा कि negative impact on agriculture industry, because our agriculture sector is not much that apt to feed the whole population. That's why our hunger index is going worse day by day, and we are not able to feed the people of India in the manner that we have to. कुछ So स्टेट्स ने आई एग्री मतलब आई एग्री विद अच्छा तानिश बट प्रिवेंटिव प्रॉब्लम मेजर ये नहीं है लिए कि हैं population हमारे जैसे increase सिर्फ कि होने से पॉपुलेशन and मतलब the इंक्रीज करे, solution प्रॉब्लम to ये भी है कि डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग हो रहा है पॉपुलेशन जो है वो लैंड के। हमारे लिए एडवांटेज भी हो सकती है। नहीं कुछ मतलब स्टेट्स ने अगर मतलब एक हम अच्छा अपनी प्रिवेंटिव पॉपुलेशन मेजर को लिया अच्छे से जैसे कि स्किल I यूपी agree डेवलपमेंट that स्टेट करेंगे, में population एजुकेशन is प्रोवाइड एक करेंगे लॉ advantageous. तो पास कैसे हुआ है Everything बेनिफिशियल is होगा Population is सबको। advantageous. जैसे advantageous यूएस And also, increasing young so we population can is too much advantageous. But we need to ensure that this young population get right employment opportunities. If we can't employ them, यस नहीं कुछ यस so स्टेट यस ने एक Not प्रिवेंटिव only मेजर भी employment लिया we है have opportunities, young जैसे but कि also because the मतलब population. willingness लिया है बात to कि be तो यही है employed. कि अगर स्केलेबिलिटी ऑफ अ पॉपुलेशन यूपी पॉपुलेशन विल गवर्नमेंट बढ़ेगी ने तो डिपेंड हर अपॉन किसी को वेदर द एम्प्लॉयमेंट नहीं पॉपुलेशन इज मिलेगा। कैपेबल इसके इनफ भी टू डिफोरेस्टेशन हो गवर्नमेंट रहा ने है बोला है बी कि गुड दो फॉर स्टडी एम्प्लॉयमेंट एनवायरमेंट जो और है फॉर एम्प्लॉयमेंट हेल्थ हम प्रॉब्लम लोग हो रहा है बहुत इतना ज्यादा हो रही है हम पॉपुलेशन लोगों को के, दे ही नहीं इन सकते हैं। लोगों को हमारा ज्यादा जो देखा है जा रहा है। लगभग मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है हमारा यंग पॉपुलेशन है ना, मतलब अबाउट 50 to 60% पॉपुलेशन जो है मतलब उसके अराउंड है। अभी एग्जैक्ट डाटा नहीं है लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन है हमारा उसका एवरेज एज जो है 29 ईयर है।
तो अभी Friend, what I ये am मतलब thinking that I would friend, अभी what जो I है am ये thinking थोड़ा that यंग पॉपुलेशन है, तो इनको in place of एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, जब प्लस उनका अगर ये हम लोग मतलब ये नहीं, अगर यूपी हम लोग गवर्नमेंट ये ने कि स्टेप हमारा लिया है जो हमारा ग्रोथ करने पॉपुलेशन में है कुछ स्टेप Yeah, लिया yeah. है बेटर कि एजुकेशन उसमें Like मिले इन्होंने ये like करा है I कि have remembered that there are several facilities मिले government which तो have who have taken step that डिफोरेस्टेशन में those उनका family who प्रॉब्लम है, have more than डिफोरेस्टेशन two जो है child कि won't फ्रेंड्स, be आई थिंक हम given. लोग आराम मेन से पॉपुलेशन वी कैन इंक्रीज हैव अ गया। स्लो Yes, sir. Won't डिस्कशन, be. सब लोग बोल सकते हैं। Yep. What I was saying that there are several state government who have taken the decision that in the family who have more than two child won't be given government jobs. So such kind of initiative, I think, would be better गवर्नमेंट to जॉब आई control थिंक ये population तो in. but Yes, गवर्नमेंट controlling जॉब for तो the population मुझे is लगता not है a betterment of the कि country. solution at all, because again, if controlling population is viable, it is required, but only controlling population is not a good idea. We have to educate our population. यस We यस have to give a better opportunities to them so that they can add in our society. They can But we, provide some Yeah, but contributing to the but society as well. Kaju, I would like to add, but we have limited resources. yes, So if resources are the limited. population is Yes, going beyond a certain limit, then there would be definitely some restriction on that. So yes, I we agree have with to you. I organize agree with some you, but holistic approach to Actually, uh, Tanish, I also to want to add government that of India even if has we have young already launched a population and few lot of schemes like population, there is Mission Parivar Vikas, which is that awareness about the contraceptives and reproductive health to the public population, and also we can educate the female population about it. Education is the key that will be able to control the population and gain the population to our own advantage. see, That is Tina, the I Picking up on totally your agree point, with your Tanish, I point, would but like to add here that drinking मैं water एक चीज बोलना shortage चाहूंगा is कि very possible अभी in the जो है ना near हम लोग future. एक And besides that, we also know that coastal cities like Mumbai and Kolkata are facing in the future the prospect of getting submerged. So this is ironic situation right now. yes, yes, So I think we latestly need in to Bangalore tackle there is both water the aspects scarcity. of it. फ्रेंड्स एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोग एक डायरेक्शन में डिस्कस कर लेते हैं ना। हम लोग पहले रीजन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इफेक्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर चैलेंजेस डिस्कस कर लेते हैं, और फिर उसका क्या कहते हैं रेमेडियल Solution. मेजर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक Okay. डायरेक्शन में रहेगा तो सही रहेगा, मतलब कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। तो भाई पहले हम लोग है ना रीजन डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट क्या रीजन है, मतलब ये जो है Re- पॉपुलेशन इंडिया का, मतलब जो इंक्रीमेंट हो रहा है इसका रीजन क्या क्या है। एक lack तो of awareness. lack मतलब of awareness among the लैक I अवेयरनेस think हो गया, one और reason behind the प्रॉपर population And growth एजुकेशन नहीं है। sometimes there is also that applying so many schemes, people also don't listen. They want to do what they have to do. So we have to take some strict actions among them also. यस मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मेन मतलब कंसर्न that is वही है, correct. lack of Lack of ये awareness. awareness. फैक्टर ये फैक्टर ज्यादा, especially क्योंकि in women. The lack of awareness is especially in women. हाँ यस No, And we especially cannot say in like village that. areas, No, Lack we of cannot awareness just is comment very the like one. we that cannot because say there is no that. concrete proof behind that. Yes, yes, correct. Yes, in और rural अदर areas, अदर कोई रीजन। not only in rural areas. Awareness can be from any side, either male or female. That we cannot say that it is only female issue or man issue. Secondly, Yeah, because in Shrikant, family I would planning, like to both the add father that and the mother has to in come together to in the make a region, decision. in some rural region, there Actually, child marriage what is I also think going that on, which is people also has the to main reason of greater population. People are चाइल्ड married at मैरिज very ओके। low age, like in Rajasthan. यस एंड सम स्टेट ओके। नहीं, एक ऐसा स्कीम निकाला जाए जिसमें कि एजुकेटेड पीपल रूरल एरिया जाकर वहाँ पे सबको अवेयर करे ये सब के बारे में। मेन ये yes, मुझे there लगता are है। ये तो आपका Currently, ये we are रेमेडियल discussing मेजर में आएगा। about the there reason are many things going on. why the population is I also increasing day think by day. कि एक बड़ा रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ का कि कई सारे बैकवर्ड विलेजेस जो इंडिया में है, वहाँ पे कई लोगों को ऐसा लगता है कि घर में एक लड़का होना चाहिए। हाँ, And if I they have totally only agree. girls in the यस यस houses, यस I so agree they with you. want a boy in the house. This This is the problem main is all reason. in the urban Almost city all also, villages not in में villages. Urban city में भी ये problem है कि घर पे एक लड़का होना चाहिए, not in हाँ also अर्बन in सिटीज the में भी है, बट कि वो मोस्ट ऑफ वंश दीज आर आगे बढ़ाएगा। फ्रॉम विलेजेस। हाँ, वंश का दिक्कत है कि घर को कौन संभालेगा मतलब। हाँ, Yes, that is correct. वो एक रीजन है। बट इसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्चुअली लोगों को जागरूक करना चाहिए कि लड़का और लड़की बराबर है। हमें वो हाँ। चीजें बताना होगा। हाँ, और लड़का ये और भी लड़की अवेयर करना बराबर। होगा काजू, कि पता दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये प्रॉब्लम उनके साथ भी हो रही है जो लोग हाईली एजुकेटेड भी हैं।
ये उनके साथ ही Yes. नहीं है जो I agree. बैकवर्ड एरिया से उन आते लोग हैं को या फिर पढ़े लिखे नहीं है उन ज्यादा, लोग को इनका ये उनके इम्पैक्ट साथ भी बताना प्रॉब्लम होगा है कि जो फ्यूचर में क्या बड़े इसका अच्छे इम्पैक्ट खासे पढ़े लिखे हैं। Agree. Totally agree. नहीं, कोई भी पेरेंट जो है खासकर इंडिया में मतलब गर्ल को मतलब उतना क्या कहते हैं वेटेज नहीं देते हैं, प्लस वो ये मान के नहीं चलते हैं कि वो हमारा मतलब बुरे टाइम में या ओल्ड एज में वो हमारा साथ Okay. देंगे, So ऐसा that वो is मतलब the नहीं reason, कंसीडर but Actually, I it is the think we are We have tradition. deviating to from eradicate this Topic, orthodox girls are mentality. going to their husband's house, so we don't consider them as the people who will continue the legacy of the family. The girls are never considered as the people who can continue the legacy of the family. So the village actually we people, should not discuss these things. We should be on our topic. We are going Yes, ahead. we are क्योंकि We हमें deviating are from जेंडर the more. We topic. should not do डाइवर्सिफिकेशन पे this. डिफरेंशिएशन पे आ गए हम, तो हमें लग रहा है हाँ डाइवर्सिफाई हो रहे हैं नहीं, हम टॉपिक अभी से। मतलब We should रीजन discuss तो हम the लोग डिस्कस कर लिए। challenges that are Okay. Challenges. कौन ये कौन से Challenges challenges जो हैं है श्रीकांत, आई effect थिंक दीज आर द increasing के लिए और क्या क्या ब्रॉड रेमेडीज। रीजंस फॉर द पॉपुलेशन। आई यस, थिंक दीज आर इनफ। इफेक्ट में हम लोग मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ वाटर फैसिलिटीज और स्कार्सिटी, क्लाइमेट चेंज, फूड वाटर स्कार्सिटी, क्राइसिस, क्लाइमेटिक चेंज, actually we should मतलब not and see natural deforestation. resources and healthcare is one of the हेल्थ, reasons. हाँ, One more thing, हेल्थ केयर food what I फैसिलिटी। security. can, one more thing I want to add that due to our population, overcrowding in urban areas is getting increasing drastically. That is the major impact. हाँ, आई टोटली Because एग्री विद काजू एज व्हाट सेड, लाइक दिल्ली में तो घर मिलना मुश्किल हो गया। और मैं अभी फिलहाल yes, बॉम्बे yes, गया था, that is हाँ, correct. because मतलब of उधर increasing खाना सस्ता है population, लेकिन रहना महंगा हो infrastructure गया is था मतलब। cost is हाँ also वही going वही high day by लैंड day. लैंड का And in urban areas, everything prices also is getting increased. Like if you want to take some Yeah, because of vegetable, the you will not demand and get supply fresh issue. because of Yeah. high vegetable. demand of Yeah. Yes, food. demand and Yes, supply. yes. Yes, and it also High demand of affecting the correct. urban also areas I in think terms of in the drainage problems, clogging of the drainage problems, and various other problems. Because whenever we see Rohit, that that comes in water scarcity. every first rainfall, what Yes. I am देखो saying पर that कैपिटा, all this land use is coming in water पर scarcity. कैपिटा एक हम एक ये भी बोल सकते हैं कि पर कैपिटा जो लैंड अवेलेबिलिटी है Land available is very low compared वो to the भी global मतलब average. वो भी हमारा रेडियस हो गया है काफी। One more So thing I these want to are add that वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि इनकम इनक्वालिटी भी हो रही है। जैसे yes, पॉपुलेशन that is बढ़ रही correct. है तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो जो रूरल एरियाज के पीपल है वो अर्बन एरिया में जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके हाउसिंग में प्रॉब्लम आ रही है और लैंड अवेलेबिलिटी है, तो उसकी और वजह से भी जो है वो टोटली इनकम एग्री विद व्हाट इनक्वालिटी भी हो रही है। और एक मैं पुअर इसमें है एक Yeah, पॉइंट और ऐड picking up पुअर करना on है your चाहूंगा, उसके point, इसकी Reena, I वजह से agree with पॉवर्टी it. भी आया बढ़ था रही है। गुजरात का जो जिसमें गैप है So we मतलब should रिच also क्लास एंड मिडिल mention 19 क्लास that पोस्ट एंड पे बिलो मतलब बीपीएल, द 1 गैप लाख इज कंटिन्यूअसली कैंडिडेट्स इंक्रीजिंग। ने अप्लाई कर दिया था गुजरात में। Now we 19 can पोस्ट पे 1 लाख कैंडिडेट ने, मतलब कितना अजीब सा सीन था वो। पेपर न्यूज़पेपर में भी आया था कि सब मतलब इकट्ठा हो गए 19 पोस्ट इसकी के लिए वजह से मतलब। क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन की ज्यादा होने की वजह से लोग क्राइम करते हैं, अपना पेट भरने के लिए लोग चोरी करते हैं, लोग क्या यस कहते यस हैं ये भी मर्डर कर सही रहे है, हैं। यस। बर्गलरी अटेम्प्ट्स और थेफ्ट and ये now इंक्रीज हो I रहा है think बहुत। one we other should issue discuss we some can important discuss issue about health this sector increase हो in रहा है population is that there will be shortage of finite resources that a country has to provide. So we already know that the undernourishment in children of India is already a big concern for us. So it will only aggravate in the future because of this. ओके। so now नाउ I आई think थिंक we श्रीकांत can वी अब शुड discuss मूव some टुवर्ड्स द negative सॉल्यूशन। effects also. चैलेंजेस मतलब अभी क्या चैलेंजेस है प्लस फ्यूचर में क्या सबसे चैलेंजेस बड़ा है। चैलेंज तो यही होगा कि सबसे एम्प्लॉयमेंट बड़ा इशू चैलेंज हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। रिसोर्सेज। कि नौकरियां कैसे मिलेगी। मतलब पोस्ट कम होती है और एम्प्लॉय मतलब जो अप्लाई करने वाले होते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट है। ज्यादा रहता है, तो Like मतलब एक you सीट can पे see the मतलब example of 50 GAIL 100 or में NEET, रहा है। the current example of NEET. There are so many people who have filled the form of NEET, 16 लाख and कैंडिडेट्स ने फिल करा था और सीट्स होती है people अप्रॉक्स scoring more than 10,000। हाँ, पेपर 720 are स्कोरिंग not even getting to able to get into a high टॉप कॉलेज high, में। uh, बहुत अच्छे मतलब मेडिकल स्कूल में उनको एडमिशन एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा था एम्प्लॉयमेंट विल बी इतने ऑन अच्छे क्राइसिस, नंबर यही लाने ना, के बाद भी। एम्प्लॉयमेंट विल बी ऑन हेल्थ केयर क्राइसिस। में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि हमारी Employment in पॉपुलेशन admission बढ़ into रही है a और higher उतने education हमारे is also a हेल्थ केयर में crisis. मैं डॉक्टर्स एंड तनिष्क के नर्सेस पॉइंट से नहीं है, तो कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। तनिष्क ने जो कंपटीशन इतना हो जिसका चुका है जो कि एक टॉपिक एवरेज उठाया है स्टूडेंट उन्होंने, तो कर नहीं तनिष्क पा ने रहा है किसी भी कंपटीशन में। तनिष्क ने जो नीट का टॉपिक उठाया है मैं Also, उससे I कम्प्लीटली think the एग्री करता हूँ। इससे issue स्टूडेंट with लोग population डिप्रेशन में जा रहे हैं and क्योंकि the relation वो with पहले ही pollution पता was चल जाता है discussed already. 70 से अगर But I कम would आया तो like to फिर add one point here that this शायद huge कॉलेज ना population मिले। will lead to increase in pollution, and we are already suffering from our main rivers being polluted. So if we cannot tackle this issue right now, in the future it will only increase many folds. Yes, correct.
हम लोग एक मतलब कोविड जैसा एक महामारी का भी बात कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा महामारी टाइप का होगा कि जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन अफेक्टेड हो जाएंगे, ऐसा करके हम लोग कुछ बात तो हम्म। Yeah, कोविड जैसा like मतलब Manish जिससे already mentioned, the bed पर shortage श्रीकांत, मैं during the इसमें एक बात COVID ऐड करना was a चाहूंगा। big issue जब faced by कोविड the आया Indian था population. तो हाईली पॉपुलेटेड एरिया ही अफेक्टेड नहीं होते हुए थे, जो लो पॉपुलेटेड रीजन है वो भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे, लाइक इटली, वो तो नहीं पूरा मतलब रेडिकेट हो गया था। कोविड का प्रॉब्लम नहीं था, कोविड का टैकल करने का जब बात आया था तो हाँ, हॉस्पिटल्स वो ओवर प्रॉब्लम क्राउडेड था, हो गया था। तो वो वो इतना हम टैकल लोड, नहीं कर पा रहे थे। इतना मतलब बेड शिफ्टिंग और वो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी हुआ था रिलायंस ने, मतलब एक मतलब कुछ वीक के लोगों अंदर का तो हमारे हॉस्पिटल पास बनाना पड़ डेटा गया है था। कि ये लोग इतने आई बीमार हैं थिंक या वी आर फिर इतने मरे डेविएटिंग हैं, कुछ फ्रॉम द लोगों का तो टॉपिक। डेटा भी नहीं है। हम लोग इन कोविड चैलेंजेस डिस्कस में कर रहे दिस हैं, कुड बी टॉपिक इज नॉट काउंटेड। Yes, we रिलेटेड टू will discuss कोविड। only COVID things. Srikanth, I चैलेंजेस think we can now take up what steps can be taken for this. Some positive aspect also we can discuss. Now can we come toward solution of these kind of problem? Yes. मैं एक चीज आई बोलना थिंक चाहूंगा जैसे कि रूरल चैलेंजेस में एरियाज क्या है होगा वहाँ पे हम लोग कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जो है वो रख सकते हैं, ताकि जो भी हमारे ज्यादा एजुकेटेड पॉपुलेशन नहीं है वो भी हमारी इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट कर सके। एंड अगर लोग खुद एजुकेटेड होंगे तो वो आगे भी अपनी फैमिली प्लानिंग में ये चीज का ध्यान रखेंगे। नहीं, एक स्ट्रिक्ट And मेथड मैं ये एक भी I हो चीज would सकता है, like to जैसे add मैं that एक पॉइंट जो है ना जॉब के चैलेंजेस में लिए ऐड करना मतलब चाहूंगा कि अभी जो yes, क्या कहते हैं ना, अभी जो इंडिया का अभी मतलब कुछ भी अगर इंडिया में प्रॉब्लम होता है, मतलब हेल्थ केयर रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो एवब जो मतलब क्या कहते हैं बिलो बीपीएल से ऊपर होंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर होंगे, उनके लिए तो मतलब वो किसी तरह अरेंज करवा लेंगे अपना जितना भी उसका हेल्थ इशू वगैरह होगा, वो अपना किसी तरह चाहे कितना भी महंगा हो जाए ट्रीटमेंट कॉस्ट वो करवा लेंगे। लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन जिसमें मैक्सिमम पीपल लाई करते हैं इंडिया के अबाउट We cannot say मतलब like 50 to that. 60%, उसके लिए मतलब बहुत ज्यादा नहीं, प्रॉब्लमेटिक हो एक जाएगा। नहीं यार, एक ये सरकारी ये सोल्यूशन है अस्पतालों कि में भी ना मतलब बहुत ये दिक्कत आती है। जैसे सरकारी ये गवर्नमेंट ने थ्रू नहीं है इंट्रोड्यूस करा क्योंकि है नहीं मिलता उनको बेड, जॉब नहीं के नहीं अंदर आई मतलब टोटली एग्री ये विद सही नहीं श्रीकांत। है। आई एम नहीं, नॉट ये सही एग्रीइंग विथ कह हिम बिकॉज श्रीकांत बिल्कुल नहीं ठीक कह रहा है। नहीं, सिर्फ नहीं बीपीएल परिवार वाले ही हेल्थ केयर सफर नहीं डिस्टर्ब हो करते चुका हैं, है ये बीपीएल के नीचे अलावा बीपीएल के ऊपर वाले भी सफर करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बीपीएल दैट इज राइट राइट बिलो राइट। पॉवर्टी, कर, करते हैं लेकिन यस मैक्सिमम यू कैन सफर नॉट, वो करेंगे, मैक्सिमम जरूरी सफर नहीं वो है, करेंगे। जरूरी नहीं, नहीं है यू कि कैन नॉट जनरलाइज लाइक दैट, यस यस नहीं, उनके दैट क्योंकि इज पास एवरी आई एम एवरी टेलिंग। राजू, एवरी व्हाट सेक्टर इज श्रीकांत इज अफेक्टेड। वांट टू टेल कि उन जो बीपीएल से ऊपर हैं, जो मिडिल क्लास है, उनके पास कभी कभार ऑल्टरनेटिव होता है कि वो कहीं और इलाज करा सकें, लेकिन जो Yes, but जिनकी for हालत BPL बहुत ही person खराब है। also, for BPL person also, government are giving. There are so many schemes government are launching nowadays, like हाँ, Ayushman Bharat आयुष्मान, and all. That आई is एम for एग्रीड। BPL person only. Yeah, you are saying So correct we cannot say completely. like that BPL only we can't generalize, BPL family. rich, middle and below poverty we can't See, generalize it. these schemes are Yes, going from फ्रेंड्स मैं एक 2014। चीज बोल रहा हूँ, अगर इसके सच्चाई पे मतलब इसके अगर प्रैक्टिकलिटी पे हाँ, बात एप्लीकेशन ऑफ जाओगे, दिस स्कीम, आप मतलब स्कीम लॉन्च करना अलग है, इसका मतलब स्कीम अप्लाई करना एक्चुअल क्या अलग है। कंडीशन है वो देखना अलग है। नहीं नहीं, जो अभी आपने अगर देखा जाए एक्चुअली तो इसका हमारे लाभ भी बहुत कम लोगों को मिल रहा है, ये जो नहीं स्कीम एक्चुअली है मैं बताना इसका चाहता हूँ लाभ कि मैं बहुत कम लोगों को मिल रहा जिनको विलेज लाभ है। मिलता एरिया है वो से हूँ। काफी अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। नहीं, यस Srikanth, what सब you are saying, चीजें। that is the problem of awareness, not like BPL problem. वो awareness नहीं है उनके कारण, उनको बताना पड़ेगा कि नहीं, आई क्वालिटी लाइफ थिंक कैसे करप्शन जीते ऑल्सो हैं टेक्स मतलब। प्लेस अ ग्रेट पार्ट इन सच काइंड ऑफ स्कीम्स। पीपल हैव ओके पावर, ठीक है, दे इसका यू मिस यूज देयर पावर। इसका रेमेडियल मेजर वगैरह डिस्कस कर ले। So हाँ one thing I can talk about the steps we can take to tackle this issue is that China in the near past had a scheme where families having two or less children were able to get benefits from the government schemes. The moment they got three or more children, they were barred from the एलिमिनेटेड scheme. फ्रॉम द गवर्नमेंट। So that kind of friend, discouragement will act in one our thing I favor. want to add एक्चुअली here, इसमें एक चीज These और भी these कर schemes सकते are हैं going कि in one service गवर्नमेंट thing I like one want of to the add best प्राइवेट here, केयर को भी practices। अगर आना हम लोग चाहिए देखें क्या, तो और पॉपुलेशन सबको करना पॉपुलेशन को चाहिए ऐसा कुछ। friend, Debating for point I want to this add. kind of scheme because now currently they don't have a huge young population. Yes, 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 They have that is यस introduced correct. one-child policy, and now people And are not ready to go to army or defense forces because parents are not ready to send their children at such places. They have only one child. in some country like Japan and all, there are no workforce. Like Israel also, their population growth are very slow. So एक्चुअली no, See, they want. we are talking about Raju, India, not Just to we are Israel or clarify discussing Japan. about myself, the I am not We have solution, to against discuss the not of saying India that population don't only. that the deviate. people family should limit to one child. I am saying that the upper limit should be two.
that way we can tackle the issue. Correctly said. That is to be And the and I valid. would like to add that the हमें ना लोगों को सेक्स एजुकेशन के बारे में जितना ज्यादा हो सके फ्रॉम देयर बेसिक एजुकेशन टू देयर कॉलेजेस इन देयर वर्क प्लेस, हमें बहुत ज्यादा उन्हें एजुकेट करना चाहिए, चाहे ऑनलाइन मीडियम से करें, चाहे ऑफलाइन, चाहे वो आंगनवाड़ी के थ्रू हो, चाहे वो कैसे हो, लेकिन ये सेक्स एजुकेशन का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब इन आवर एरा। how to live quality of life, not the how to live रेमेडियल that, मेजर्स में हम लोग लगता है, मुझे लगता है ना कि रेमेडियल मेजर्स में हम लोग विलेज को मतलब विलेज के लिए अलग हमको देखना चाहिए और टाउन को हम लोग अलग देखना चाहिए, दोनों के लिए अलग अलग रेमेडियल मेजर मतलब प्रोग्राम वगैरह In that case, देखना चाहिए। I think there should be three classifications: village, suburban, and urban, because suburban is very congested right now. यस, आई थिंक मुझे लग रहा है कि प्रोग्राम अवेयरनेस का जरूरत मैक्सिमम अभी विलेज साइड ज्यादा है, क्योंकि सब अर्बन और अर्बन में फिर भी मतलब लोग अभी क्या कहते हैं, अभी जब गांव से शहर आते हैं तो उनका क्या कहते हैं कॉस्ट वगैरह बहुत सारा कॉस्ट बढ़ जाता है, तो उस चक्कर में वो मतलब मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन उनका रहता है, मतलब मैक्सिमम हाउसेज में 2 चिल्ड्रेन रहते हैं, लेकिन गाँव में अभी भी लोग मतलब 3 4 5 अभी भी कर रहे हैं। एंड श्रीकांत, आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी जाना चाहिए। फ्रेंड, मेरे हिसाब Please से सबसे conclude ज्यादा now. इम्पोर्टेंट चीज जो है, and Please they are conclude now. facing this threat. Conclude now, yeah. One of you. Unmute Raju, you yourself. are on mute. So may I conclude? Conclude anyone, yeah. okay, sir, I am Oh, taking the opportunity to conclude our GD. So our GD was like mixed view. Some of our friend has given like what we are telling that only disadvantage of our GD, some of our friend told. But I would like that what I am telling that there are some benefit also. We talk about what could be the remedies so that we can slow down our population. Then we talked about what are the effects and causes. These things we have talked. Okay, sir. That's This it? is I am concluding. Okay. Okay, Abdul, please conclude. यस सर। सर इन मेन इनका सबसे पहले तो हम लोगों ने इसका रीजन डिस्कस किया। इसका रीजन, मेन रीजन जो है पॉपुलेशन का वो है अनएम्प्लॉयमेंट है। और सर विलेज एरिया में से हम लोग जाके जो मतलब एजुकेटेड पीपल है उनको विलेज एरिया में जाके उनको बताना हो, उनको बहुत लोग को बताने से भी वो समझते नहीं, उन लोग को इम्पैक्ट बताना होगा क्या इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडिविजुअली, वो डिस्कस हुआ सर इनमें। और सब मेन कंसर्न सर ये डिफोरेस्टेशन हो रहा है और फिर फूड स्कार्सिटी सर। आज अभी जो प्रेजेंट में अभी जो इतना देखा जा रहा है कि शुगर और सॉल्ट में प्लास्टिक ये सब इसीलिए हो जा रहा है क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन के कारण ये सब देखा जा रहा है सर। वही, दैट्स इट। Rohit, conclude. Thank you, sir, for giving me this opportunity for concluding this healthy discussion on population of India is not sustainable and viable. And we have talked about remedies, we have talked about the problems, and we have talked about the outcomes, and we have also extrapolated how these population growth can have huge consequences on our future population. And I think that this huge population of India, it has a lot of many disadvantages than advantages, and we should focus more on how to remedy it as soon as possible. Okay, now Harisha, conclude. So friends, let's conclude the discussion now. So we really put forward some great points during our discussion, and although we could not reach a consensus, the discussion was very good. So some points were for the favor, like Kaju mentioned, that having this huge population on our side means if we can get them to work in our favor, then the GDP of our country will be positively impacted. On the other side, the huge population will lead to pollution and scarcity of resources, which is a challenge. And the prospect of having adequate job opportunities for this huge population is also a very big challenge for us. In the steps we can take to tackle this issue, we discuss points like the scheme China has taken and the adverse effect we also suffered from it. So that's all from my side. Okay, now Reena, please conclude.
Thank you everyone for giving me the opportunity to conclude the discussion. The topic was population of India, not sustainable and viable. We had a fruitful exchange of ideas, although we could not reach consensus. But I think all of us agreed that the main reason for increasing population is the lack of awareness among the individual. And the various challenges associated were like increased hunger in our country, increasing crime, and then increasing unemployability and the stress on the natural resources and increase of pollution and carbon emission. And various methods were also discussed, like we could incorporate two-child policy, like similar to China's one-child policy, and PM mission. Parivar Vikas mission to educate the people about reproductive health. Thank you. Okay. Now, Srikanth. Okay. Thank you, everyone. Let me take the opportunity to conclude the discussion. It's a very healthy discussion. हम लोगों ने रीजन, इफेक्ट, चैलेंजेस एंड रेमेडियल मेजर को डिस्कस किया. इन रीजन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस पीपल में नहीं है, मतलब पॉपुलेशन को लेके, मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल इन वुमेन में खास करके. उसके बाद है कि कुछ लोगों ने एक पॉइंट दिया कि चाइल्ड मैरिज एक प्रॉब्लम है, कि कुछ स्टेट में अभी भी चाइल्ड मैरिज का सिस्टम है. कुछ लोगों ने एक पॉइंट दिया कि अभी जो है कुछ लोग बॉय, मतलब अपना एक, उसके जितने भी बच्चे थे उसमें एक मिनिमम एक बॉय होना जरूरी है. ये भी एक रीजन है. तो इफेक्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि अनएम्प्लॉयमेंट इसका इफेक्ट है, हेल्थ फैसिलिटीज डिग्रेड हो रहा है, क्लाइमेट चेंज इसका इफेक्ट है, वाटर क्राइसिस, हंगर में हम लोग का रैंकिंग बहुत पीछे चला गया है, और पर कैपिटा लैंड अवेलेबिलिटी अभी हमारे का बहुत कम हो गया है, प्लस क्राइम, थेफ्ट, करप्शन ये सब ज़्यादा इंक्रीज हो गया है. चैलेंजेस में हम लोगों ने बात किया कि एम्प्लॉयमेंट विल बी ऑन क्राइसिस इन कमिंग डेज, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज हम लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आने वाले दिनों में. और हम लोगों ने फिर रेमेडियल मेजर में डिस्कस किया कि हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम पंचायत लेवल पे और मतलब अर्बन लेवल पे अलग अलग तरीके से हम लोग प्रोग्राम को चला सकते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले. उसके बाद हम लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से मतलब इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए. इनिशियली टू चाइल्ड का पॉलिसी आना चाहिए, जिसमें कि वो मतलब उन परिवारों को सम्मानित भी करे जिन्होंने इस पॉलिसी को सही तरीके से फॉलो किया. थैंक यू. थैंक यू. Okay, now I think we are left with Danish. Thank you, everyone. On the behalf of the whole group, I would like to conclude the topic of today's GD. तो आज के जीडी में जो मेजर कारण था पॉपुलेशन इंक्रीज होने का, मतलब वो ये था कि एक तो अवेयरनेस बिल्कुल लोगों में कम है. मतलब वो अभी भी मानते हैं कि वंशवाद है, मतलब लड़का ही आगे परिवार को आगे बढ़ा सकते, लड़की नहीं बढ़ा सकती. और ये एक और कारण है कि मतलब विलेजेस में जैसे मतलब जो चाइल्ड मैरिज के कारण भी, मतलब जो लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है सेक्स एजुकेशन के कारण, मतलब सेक्स एजुकेशन क्या होता है उसके कारण. तो इसके कारण हमें चैलेंजेस ये फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे रिसोर्स डिप्लीशन बहुत हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और सिचुएशन मतलब कंजेस्टेड हो रही है अर्बनाइजेशन अर्बन एरियाज में भी. और कोविड में भी ये देखा गया था कि हेल्थ केयर सिस्टम भी ओवरलोड हुआ था. और डिस्कशन में ये भी पता लगा है कि फूड सिक्योरिटी का भी इशू हो जाता है. मतलब कभी कभी जो प्राइस होती है वो किसी चीज़ की इन्फ्लेट कर जाती है क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम रहती है. तो इसका मतलब पॉपुलर रेमेडियल मेजर तो ये हो सकता है कि मतलब एक तो स्कूल करिकुलम में मतलब एक इंट्रोड्यूस करना चाहिए हाउ टू लिव क्वालिटी ऑफ लाइफ, और सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए, और मतलब नुक्कड़ नाटक ऑर्गेनाइज करना चाहिए. मतलब हमने ये कंक्लूजन में पाया. और थर्ड ये है कि मतलब एक प्राइवेट और गवर्नमेंट बॉडी को मतलब साथ मिलकर एक इंट्रोड्यूस करना चाहिए रिफॉर्म कि जिसके भी मतलब
दो चाइल्ड से ज्यादा है तो उनको शायद डिवेयर कर देना चाहिए जॉब से, मतलब दे विल नॉट बी अलाउ, और एक मतलब ऐसा कर सकते हैं कि प्रमोशन नहीं मिलेगा उनको। तो मतलब लोगों को थोड़ा रहेगा कि हाँ मतलब दिस इज द राइट वे टू स्टॉप द पॉपुलेशन। थैंक यू। Okay, Tanish. Sir, I am audible. Yeah. Thank you, sir, for giving this opportunity. After the healthy discussion on the topic, basically we have discussed about the reasons, consequences, and the solution. In the reason, we have discussed that because of lack of awareness and the orthodoxy mentality, which are the main reason for the increment in population. And the are water scarcity, hunger, climatic adversity, which leads to increase in pollution, and which is not very apt for the country. Then we have bifurcated towards the solution, and in which all of us have a different approach to guide different population which come from different areas. Like we have different approach for the people coming from rural area. We have different approach for the people coming to semi-urban areas, and we have different approach to the people who are coming from urban areas. So that's how we conclude our GD, and thank you. Anybody left? Okay, I've sent you the feedback in the WhatsApp group. You can see later on. But what I found is like common my feedback to all of and as a group is you were not sticking around with the topic actually. Topic you forgot. Population of India not sustainable and viable. You see this statement you read. Either you have to agree with the statement or partially agree or partially disagree or you are not to agree. So the introduction which Tanish gave, so the introduction part was there, but you started talking about the population with pollution, climate change, health problems, etc. I told you, Tanishq, like introduction format is. Let me give you the clear cut. What can be the better way to introduce? Introduction is like how you want others to discuss on the topic. Okay, friends, my name is Tanishq, and let me introduce the topic given for the group discussion. The topic is population of India not sustainable and not viable. In my opinion, it is very relevant topic because India has become the most populated nation on earth, and also our population is growing continuously. Unfortunately, we could not do our decadal population census, which was due in 2021. So we don't know exactly what our population is, but extrapolation says that we are the most populated nation, maybe more than 1.4 billion. So now, do this? I mean, our resources in India can sustain this much of population. That is a topic given. In my opinion, this statement is partially correct. Why? Because population itself is not a problem, but the quality of the population, the skilled population, and making use of proper this population, making use of the resources properly, that is something which is very important. So if we have certain advantages associated with our population, like demographic dividend, which is related to the age, younger age, and we can run our economy. India can become the third largest economy in the world, and we can sustain our population and population growth. But yes, there are certain things which are required for that. Friends, I think we should discuss this entire topic into the categories of like what are the challenges associated with more population of India, how to overcome those challenges, and to convert large population not as a liability but into asset by enhancing the skill of the people. And what are the other things which can be done to control the population and sustain it further. Now I open the house for the discussion. So give the direction to the discussion. That can be the introduction. I tell you one thing, like China was also most populated nation a couple of years back, but they never talked about this because they became the world number one manufacturing hub. They become the largest, second largest economy in the world, competing with US only now. So China's population, if it was not problem from them for them, why Indian population is problem for us? We need to think over that. So it is like in China, they became the world manufacturing hub. Why? Because their population was skilled. Our population is not skilled. We enjoy demographic dividend. That means our largely our population is in that age group with where they can work. So are they skilled enough to work? No. If they are not skilled enough to work, their younger age may be of no use to us.
And if they are not aware, they will be misusing the resources. Many of you said, okay, awareness kam hai, awareness is to be generated. Awareness, skills, awareness कैसे आती है? Education के साथ. Skills कैसे आती है? Skill enhancement करना पड़ेगा. Government has many programs of skill enhancement. We need to think over that. So we need to focus on that. So friends, how to make people aware about population, problem of the population growth. And low socioeconomic background people in India, like the families where socioeconomic background is less, they are breeding more, their population is more, there are more kids, so that may not be good. So we need to basically make people aware that more number of children does not mean better, financial position of the family. So that we need to make them aware. We need to focus. Government needs to focus on enhancing the skill of the people, providing them employment, providing them the job. So these are the things which you have to focus on. So yes, you need to agree, you need to disagree with the topic. So Tanishq, I give you the individual feedback. Tanishq started with the introduction, but yes, structure was the introduction was not very good. And impact on agriculture, you said, okay, we need to take strict action. Crime can also be there. Sex education to the people should be provided. Conclusion given by Tanishq was good. You people were giving the points, but not in some particular category. आई मीन जो तुम्हारे मुंह में आ रहा था तुम बोल रहे थे जैसे क्राइम होता है पॉपुलेशन से सो दैट शुड बी डिस्कस्ड अंडर द बैड इम्पैक्ट ऑफ मोर पॉपुलेशन आई मीन व्हाट इज नेगेटिव ऑफ हैविंग मोर पॉपुलेशन you should discuss in categories. Okay, why more population is a problematic thing. There you can discuss crime, etc. is to be done. How sex education is to be imparted to the people. That should be discussed under the category of how to spread awareness to the people. So you people were giving points, but no direction was there, no particular thing was there. So any one of you, if you will speak, like I think we are deviating from the topic. Two member talked about that we are deviating from the topic. You should say that because every time in the GD somebody will deviate from the topic. So Reena also said, okay, we are deviating from the topic. So you should not deviate from the topic. So Tanish, as of now, I'll not give you the marks first time we are doing, but still you hit somewhere around 6.4, 6.5. You need to get 7 to pass in GD of IUCL. Then Danish, I think you were the second, but take care that when two members start talking, like Reena was speaking, Danish was speaking, and one more fellow was speaking. So you need to stop when you see that parallel discussion is going on, and you need to listen to what others are also saying. It should not look like that you are not listening to others, right? So Okay, sir. sometimes there is a penalty for that. Yes, sir. So you parallelly were talking. You raise the issue of infrastructure, but then you need to see that, okay, so there should be infrastructure to sustain the population. What kind of infrastructure you are talking about? You need to see that. Job scarcity, you talked about job scarcity. You told uh, in the conclusion, you started giving the points which were not actually discussed during GD. You started giving new points. Like you said, okay, that promotion should not be given if more children are there, but that was not discussed as per me. I think what was discussed was incentive or disincentive. Promotion वाली बात नहीं हुई थी. Something which is not discussed in the main discussion should not be told in the conclusion. Conclusion should not be new point. Conclusion should be points given by other members. Most of you could not understand the structure of the conclusion. I think one or two members talked about, like Reena could speak about that, and one more fellow spoke about the conclusion. I'll say that is very good. I think that was Shrikant spoke very good conclusion. So conclusion is having a format. I mean, whatever others have spoken, you have to say about that only. Yes, So sir. Danish, somewhere around 6.2, 6.3, as of now you are hitting. So I have Okay. given you the feedback. Please work on that. And more frequently you are to talk. So your participation in number of times was little less. Yes, Reena sir. was participation was good. She added that natural resource, food scarcity, hunger index point she mentioned. She said it can be advantage. She talked about another aspect also, that high population can be advantageous also. And then Reena, why you did not talk about the economic growth? It can be advantageous because we are going to become the third largest economy in the world, and for that population can be a good thing. Uh, don't try to discipline the group, Rina. If chaos is there, don't do that. Okay, friends, listen to each other and let's talk properly. That is a job of observer. So let them, create the chaos. Don't worry. So let them do that. Observer is listening to them. Uh, you talked about the points of control of population, contraceptives, awareness by the government. You talked about income inequality due to it. You talked about
You said we are debating from the topic skill development centers should be created. So skill wala point Reena raised, and if you raise one good point, that is, observer gives you bonus for that. So skill enhancement, I was trying to listen who will say skill enhancement, because if the skill gets enhanced, our population is not a problem at all. We'll become China, industrial skills. So that is something which we have to see. The population itself is not a problem, but if there is a skilled population. Okay, educated people will understand family planning. So that is there. Conclusion was also good given by Reena. That was also there. Then, so Reena, I'll give you 6.6, 6.5, 6.6. So very close. Just speak more. Try to be little more aggressive. Like don't be decent. Don't be decent. Keep sitting like a decent girl. You need to speak. If it will not be aggressive. The group will not be aggressive in the actual IUCL. But if it is aggressive, then decency does not work. You have to push through. You have to give your points, right? Shrikant raised the data. He started with the data. He gave some data of the land and population per unit population. But he did not complete the point. He said our average is 29 years, and he said, okay, let's discuss particular direction. So let's discuss one thing first and then go to other. He said weightage is to the girl child is less in India and all. Don't give any unprofessional sentence, Don't give like, okay, so vansh ko aage badhana and all. Don't use these words. So speak properly. So people think that son will be a earning member of their family, so they have more priority for son rather than girl child. ये professional way है बोलने का, right? Weightage नहीं होता ना, girl और boy को weightage थोड़ी दिया जाता है. They are human beings. Weightage is not to be given. और वंश बढ़ाना आगे ऐसा ऐसा करना वो प्रोफेशनल वे नहीं है, वो तुम फिर कैजुअल बात करना स्टार्ट कर दिए तुमने. तो दैट इज नॉट टू बी स्पोकन. फाइंड द राइट वर्ड एंड देन यू एंटर. देन पेंडेमिक में अगेन कम. श्रीकांत सर कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है तो दोबारा कोविड आ जाएगा. ये कोई रिलेशन थोड़े है इसका यार, कि पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहा हूं नहीं तो कोविड आ जाएगा. इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका. सो आई डोंट नो व्हाई यू सेड दैट एंड यू कुड नॉट लिंक इट, श्रीकांत. Below poverty line, people face main challenge. So you should have said why, because later on I think Kaju said no, it is not below poverty, it is above poverty line also. Whenever you say some point, या तो उसको clear करो, make up everybody understand that, or don't raise the point. So below poverty line, no problem. I mean, we understand that the poor suffer the most. That is true. Poor person suffer from climate change also. Poor suffer from poverty also. Poor suffer from everything. But you need to make a link. Why poor suffer? And you should have said that the poor people are not aware also, and they think that more number of children are more hands to earn, and they will, their socioeconomic background will improve. But unfortunately, that does not happen, and so lack of awareness among poor people, below poverty line people, is the reason that they suffer more. So you need to link that way. If you link that way, nobody will object to that. So, Shrikant, you raise very valid points, but you don't take the points further, and you don't make people understand what you want to say. That is the trouble. Conclusion, Shrikant ka best tha. The best conclusion was given by Shrikant only, but main points were spoken at the end in the conclusion. He gave many points, but you should conclude with the best points in the beginning, not the best points at the end. So that is the another thing. Kaju said working age population is this working age population economic contribution. Kaju, the term for that is demographic dividend. मैं सोच रहा था कि तुम demographic dividend as a term use करो. In the GDs and all, whenever you say some really professional word, technical jargon, it helps you. Like demographic dividend. And अभी अगर तुम IOCL के GD के लिए जाना है तो सारे मैं तुम्हें जो डॉक्यूमेंट दूंगा, whatever I will give you, in that document there will be content. Revise that. Somewhere you can hit it. Demographic dividend in India can help India to become third largest economy very soon. The moment you give this sentence, surely will pass the GD. Because the observer will see, oh, demographic dividend is using the term. और तुम क्या term use कर रहे हो? The population जो है a working age group, you're trying to explain. But that is called demographic dividend. So use the technical term. Knowledge के साथ आएगा तुम्हारा. So educate population, why not talk about skill enhancement? Again, you were talking about the educate skill program. Later on, Reena raised this skill enhancement thing, but you should have talked about it because you were the first to talk about, population का जो है education level. Education से नहीं आता employment. Understand, friends, employment does not come with education. Employment comes with skill. You may know many people who are not educated but are employed. You know many people who are educated but are not employed. You may find ITI guys, diploma guys are getting more jobs than engineers. Why? Because ITIs and diplomas, they have what? Skill.
We have what? Degrees. That is the problem actually. So education does not give employment. Skill gives employment. ये भी एक important आपका GD का topic है. Skill gives employment. Education does not. I mean, it can't be radical statement. But skill and education में से एक choose करना हो तो क्या choose करोगे? Skill को choose करोगे. So understand that. So that was Kaju. आपका conclusion was not proper. I mean, you forgot that it is the conclusion of the group. So that you have to improve, Kaju. So somewhere around 6.2, 6.1, Kaju, for you. Rishabh, you gave statistics. Land per capita, coastal cities may submerge, you said. So why coastal cities will submerge? That was not clear. I mean, are you mixing this population growth with the climate change? Understand, it is not linked actually. And if it is linked, you have to link it. So climate change or population growth का जो topic है ना, don't mix it. Don't deviate from the topic. Undernourishment, China government is giving incentive for population and all. So conclusion was better by Rishabh, but other things, participation was little less, Rishabh. You have to give more population. Number of the times you have to participate has to be increased. Shrikant, and then Kaju, and then this fellow Tanishq, and then Reena, they participated more. And then followed by Danish, and then Rishabh and Rohit. So minimum participation was from Rohit. Rohit, you can speak, your communication is good, but you participated less. So Rishabh, somewhere around 6.1 and all. Rohit, lack of awareness among women. So you raised a controversial issue and people caught you. It is not, you said women have more lack of awareness. So don't raise any, controversial thing unless until you are sure about that. So you need to link it. You need to link it that friends, because we know the data that, literacy among the women is very less, and they are not employed also much. So, that is awareness is lacking in them. So that way you have to link it. Sun orientation of the Indian society, conclusion was done better, but you immediately finished your conclusion. You should have spoken more. Conclusion part was the best for you. So somewhere around again 6.16 o'clock, 6 only I'll give you, Rohit. Abdul, you were last to start. Don't be last. If 8 people are there, observer gives more marks to first 4, less marks to last 4. You should not be the last one to start. And Abdul, you were the last to talk in the GD. So conclusion was not proper format, Abdul. You did not speak more in the discussion, so you have to speak more. You will be getting somewhere around 6 or less than 6, Abdul. You have to talk more, you have to speak more. So friends, that was all finding from my side. Anything you want to ask or tell me now? सर ये सर मेरे को कुछ पूछना था सर What? मेरे को कुछ आईओसीएल के फॉर्म से रिलेटेड इशू था तो वो कैसे क्लियर कर I'll सकता give हूँ you the मैं slot. I'll give you the slot, and in that you can, पहले मैं एक वीडियो से बनाऊंगा, मेरे को अपना फॉर्म भेज दो, मैं एक वीडियो बनाऊंगा कल, उस वीडियो को सुनना है आप सब लोगों ने, और उसके बाद 1 by 1 सेशन में आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. I'll be giving सर you वो 1 to 1. आप उसमें उसमें सर वो मेंशन कर देना कि जो अपने कॉलेज के मार्क्स नहीं लिखने उसमें एसजीपीए लिखनी है और नीचे टोटल में जब आ रहा था ना तो हमें वो टोटल करके लिखना है या फिर अपना सीजी लिखना है 8 सेमेस्टर तक का वो समझ में डू नहीं आ वन रहा थिंग, था डू वन थिंग, मेरे को फॉर्म तो भेज दो, उसका मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, एक फॉर्म भेज दो मेरे को पर्सनल मैसेज पे, एंड यू कैन डिस्कस दिस थिंग्स इन द कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो विद अदर्स. कुछ इनपुट उससे भी सर आ मेरे को जाता है लगता है बाकी मेंबर्स काफी में. लोगों को ऐसा सेम प्रॉब्लम है क्योंकि मैं सर इसी साल शूट का इट, पास आउट हूँ यू कैन शूट दिस क्वेश्चन, डोंट वरी. इन सर द व्हाट्सएप एक ग्रुप यू एक 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 सर एक चीज और पूछनी थी सर वो मैं ही पूछ रहा था आईओसीएल के पर्सनल इंटरव्यू में सर एचआर ज्यादा पूछेंगे कि टेक्निकल HR 70% मतलब सर average, ये सर सर फिक्स but ही it है can be जेडी like, से it can be like maximum technical, it can be like maximum HR, but on an average 70% HR. सर मतलब ऐसा तो नहीं है जिसकी रैंक अच्छी है उससे एचआर ज्यादा पूछते हैं या फिर जिसकी रैंक खराब है उससे टेक्निकल ज्यादा नहीं, पूछते हैं इट इज नथिंग लाइक दैट. उनको कुछ लेना देना नहीं होता उससे. सर एक जेडी के रिलेटेड डाउट था कि हेलो या गो हेड, सर जेडी गो से हेड. रिलेटेड डाउट था कि अगर अगर सर मान लीजिए सर कि हम लोग रेमेडियल मेजर से आज डिस्कस कर रहे थे लास्ट में, तो लेकिन टाइम अप हो गया, तो सर कुछ पॉइंट्स हम बाद में ऐड कर सकते हैं ड्यूरिंग नहीं, कंक्लूजन. नॉट इन कंक्लूजन, नो. सर सर कंक्लूजन में यू आर नॉट टू सर ऐड एनी नहीं न्यू कर सकते. पॉइंट. सर सर मुझे एक मुझे एक क्वेश्चन इशू एक था लास्ट क्वेश्चन सर पूछना एक था क्वेश्चन पूछना था. अच्छा रोहित के बाद पूछेंगे हाँ गो सर हेड, वन बाय वन. सर आईओसीएल में जब हम जीडी के लिए जाएंगे तो हमारा जो ग्रुप होगा वो कितनी देर पहले हमें असाइंड होगा सर, ताकि हम डिसाइड कर पाए कि कौन क्या करने पता वाला होता है है कौन क्या नहीं. तुम्हें पता होता है, 5-10 मिनट मिलते हैं. 5-10 मिनट में.
और सर एक अगर मेरा सब लोग एक क्वेश्चन है साथ ही सर। बोल रहे हैं तो फिर हमें शांत रहना है कि फिर बीच में कूदना ही है सर, बिकॉज आई हैड पॉइंट्स बट एवरीवन वाज स्पीकिंग सो आई वाज नॉट गेटिंग अ चांस टू स्पीक। Nobody will speak there. But in this GD also, you got a lot of time towards the end, but you did not participate. At the end, people were not speaking much. In the beginning, they were talking. At the end, they were not speaking much today also. But then you did not participate much. Because all my points were already said by someone else, sir. That's the point actually. So you have to enter early. In the actual IOCL GD, people don't speak much. यहाँ पे तुम तैयारी करने के लिए बैठे हो, इसलिए तुम बोलते हो ना ज्यादा, वहां पे नहीं बोलते लोग। और वहां पे क्या होगा, 20% बच्चा तैयारी करके आता है, बाकी तैयारी करके नहीं आता। जीडी उन्होंने लाइफ में पहली जीडी वही देनी है जाके, वो 70-80% बच्चा ऐसा होगा। एंड यू चेक दैट ऑन योर ओन ऑल्सो। सो और 70 सर to जो 80%। और सर जो मेरा ग्रुप एक मैं अपना असाइन सवाल है इम्प्रूव कि कैसे सर करूँ सर? आईओसीएल का ग्रुप कोई असाइन ऐसा होगा सर। क्राइटेरिया होता है कि मतलब कि मिनिमम नंबर उनको इतने देने ही देने सब बच्चों को, See, या फिर IOCL does not declare openly that you need to pass GD and pass interview, but if you don't speak at all, they may fail you. मतलब अगर आप बिल्कुल भी नहीं, आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो वो आपको पास नहीं करेगा। तो दे मे डिसाइडेड 40% और मान के चलना आपको लेना पड़ेगा जीडी में और इंटरव्यू में, दो दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड इट। मतलब जैसे सर सर मैं जीडी में इम्प्रूव कैसे करूँ एवरेज सर? कितना मार्क्स मतलब सर ये 15 अच्छा में से है रहता ना, है? 40% टोटल 15 में से। They have not declared this also. They have not declared whether it is 15% or it is 20%. So the best strategy is, friend, best strategy is like you prepare really well and go there with preparation. That's it. That's the best strategy. Don't speculate on percentage of the marks on GD and PI. So don't deviate your preparation. Just give your 100%, friends. That works actually. आप अपना तैयारी करके जाओ and don't be judgmental about your preparation and interview. Just give your best. And also सर prepare for मेरा एक क्वेश्चन है technically. सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर हमें क्या क्या टॉपिक ऐसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे हमें कुछ टाइम दिए तो हम मोबाइल से या इंटरनेट से चेक करके कुछ पॉइंट्स बना लिए, पर एक्चुअल में मे भी वहाँ पे हमें, मुझे नहीं लगता है कि टाइम मिलेगा इसके लिए। आपको पता है काजू के आज जुलाई और अगस्त के 60-70 टॉपिक ऑलरेडी पैनल में हैं इंपॉर्टेंट, यू नो दैट। अच्छा। नो सर। आपका जो पैनल एक्सेस दिया है ना तुम्हें योरपीडिया का, उसमें जुलाई यस सर। के 60-70 टॉपिक और अगस्त के भी 60-70 टॉपिक इंपॉर्टेंट ऑलरेडी वहां पे है। मेहनत तो तुम्ही को करनी है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है वो। नो नो, दैट आई एम सर मैं आस्किंग ओनली मतलब सर। इम्प्रूव कैसे करना है सर, उसमें मुझे बता दें, इम्प्रूव कैसे करना है मेरा? क्या कैसे करना है? तो ये जीडी में अपना क्या, जैसे मैं वीडियो भी देख रहा हूँ सर, जैसे अलग अलग टॉपिक में, तो मैं स्टार्ट जैसे इंट्रो से हो नहीं पा रहा है, मतलब जैसे इंट्रोडक्शन भी मैं कैसे करूँ, मैं प्रैक्टिस एंटर प्रैक्टिस भी करो अब्दुल, प्रैक्टिस करो, बोल बोल के आएगा। प्रैक्टिस करो हमारे साथ, करके ही ओके आएगा। अब ये कुछ चीजें ना बताई नहीं जा सकती। मैं तुम्हें स्विमिंग कैसे सिखाऊंगा बताओ? मैं बोलूंगा पानी में कूद जाओ, तैरना स्टार्ट करो। पानी में तुम कूद गए, अभी तैरना स्टार्ट करो। मैं बोल बता नहीं सकता तुम्हें कि कैसे करना है, वो कर करके आएगा तुम्हें। ओके स्टार्ट करो, जैसे मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन का ये एक पैटर्न है, ये कंक्लूजन का पैटर्न है, ऐसे करो। यही तो कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस से आएगा ये। ओके बोलना स्टार्ट करो। कंपोनेंट कंटेंट पड़ा हुआ है पैनल के ऊपर। सी योरपीडिया पैनल के ऊपर सब कुछ है। सर व्हाट कैन बी द इंपॉर्टेंट जीडी टॉपिक्स व्हिच कैन कम, पैनल के ऊपर पड़े हुए हैं। सर कैन यू गिव मी द कंटेंट फॉर 1 पेज ऑफ अबाउट दैट टॉपिक? यस, कंटेंट पड़ा हुआ है। सर व्हाट आर द प्रीवियस ईयर्स एचआर क्वेश्चन? पैनल पे पड़ा हुआ है। व्हाट आर प्रीवियस ईयर जीडी? पैनल पे पड़ा हुआ है। व्हाट आर प्रीवियस ईयर जीटी? पैनल पे पड़ा हुआ है। एवरीथिंग इज देयर ऑन द पैनल बिकॉज योर पीडीएफ कवर्ड फॉर द लास्ट 4-5 years वेरी मेटिकुलसली आईयूसीएल एंड ऑल। तो सब पड़ा हुआ है। और जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जो इंटरव्यू देके आए, उनका भी पड़ा हुआ फीडबैक कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। सो प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट, राइट? चलो फ्रेंड्स, आई ओके नीड टू टेक लीव नाउ, आई नीड टू टेक लीव, आई विल कैच यू अगेन। थैंक यू।